I will make you a co-host. Make Aakanksha meeting host. Okay, go ahead. So, as I was sharing that the intention of this Wednesday meeting is that we get better and better. We get time to practice. We correct our mistakes. So, the first meeting which we had on Wednesday, we had started with the different types of water. क्योंकि Kangen machine हमारे घर पे आ गई and we have started drinking water. So first we know we should understand that what are the 5 different types of water and what are the basic applications of the 5 types of water. So we had discussed that in detail. And then what happens as we drink water, we experience the benefits of the water and we feel that we should share it with our neighbors, with our friends, with our relatives. So knowingly, unknowingly, somehow we come into the business. Right? So there is a correct way, a proper system, right? There is always like 3 ways, your way, my way, and the right way. So right from the beginning, why not follow the right steps? So here we are going systematically one by one. So in the first Wednesday, we started with the different types of water. And then as you come into the business, we have to first prepare a list. So making list, how to segregate your customers with the Mint formula, how to invite customers. And then we also saw that what are the things you have to keep in mind when you are learning the demo or you are starting giving demos. Preparing your demo bag, how you are going to present, what is the briefing, and how you're going to edify your upline if he is going to accompany. So in detail, we had discussed about all those things. So yes, now we are very through with our demos. So what comes after the demo? Once we finish with the demo, product samajh gaye hai. So we also have to share business with them. Demo is very important part, but we all are here for business also. So we should also know our business plans very nicely. And as we all have started, like we don't have to show the business plan. We have to sell the business plan. So who else can do this job the best? So we have Aakanksha with us today, the most dynamic and powerful woman in our group. So I'm really very happy and I'm proud to share that today's session, the business plan, how to make your business plan more effective, will be taken by Aakanksha. So let's welcome her. Aakanksha, over to you now. Thank you, Naina ji. I'm still learning, but yes, I'm fortunate enough. Just a minute. Sorry for interruption. Sure. आप वहीं पे जाके ना हाँ जी. Participants में जाके नैना जी को distance recording का rights देना. Okay. Spotlight, rename, allow, record. So I have options of make host, allow to record local file. Yeah, okay करो. Allow to record local file? Yeah. Okay, done. Did you get the option? Yeah. Just a minute. Andy. Yeah, we're on. Go ahead. All the best. Thank you. So thank you, Naina ji. Thank you, Sudesh ji, and for giving me this opportunity. Business plan is something which we all know very well, but we somehow feel afraid कि हाँ हम सही से बता पाएंगे कि नहीं. Knowledge सबको है, but it becomes more effective when you are going in an organized way. I am privileged enough to, attend demos along with Rishabh, who's a pro. We all know, we all want to follow him. And thankfully, I got an opportunity to observe him and see that he actually follows a fixed pattern, wherein he is not telling the plan, he's selling the plan.
When he's talking, it doesn't seem like he's telling you a fixed thing. It seems like he's just making a conversation and telling the other person how monetary benefit can come along with purchasing the machine. So today I have tried to put it into steps and I'll share it with you. I've tried to keep it simple. If you have any queries, keep noting down and we'll discuss at the end. We have Nainaji and Sudesh ji to guide us. I'll just share the screen, and once it is visible, just do let me know that you all can see. I go to slideshow from the beginning. Is this slide visible to all? Perfect. So I'll make my screen the smallest because I don't want to see myself. It's visible. Okay. One more thing. Okay. If I will have somebody trying to enter, it will be prompted here, I think. I'll be able to add. Anyways. So today we are talking about Energic Kangen business plan. We'll talk about steps to be followed while explaining the plan on a piece of paper. For those who are using the PowerPoint presentation, things are still organized. They're already there. But when we are doing on the paper, at times, we just fiddle thinking, what is next? What is next? So we'll try and talk, about the ways wherein we are selling the plan, not just telling the plan. So the very first step which needs to be there is, on top of the paper, though you have been talking about the name of the company again and again, that it is an Energic Kangen product, but at top, always introduce the company once again. So the company which I'm talking about is Energic. Though the name is Energic India Kangen Private Limited, but they're mentioning only Energic with suffice. The product name is Kangen. The company has a presence in 23 countries in 40 locations, but the product is being sold in 180 plus countries. That means even the places where we don't have office, the machine goes from the nearby country where we have an office. Along with all the pointers I've covered, I'll give you a screenshot that when I write in my own writing, how does it appear? So for I write, the company name is Energic, the product is Kangen, it is there in 23 countries. Just the pointers, but when you're writing the point, talk about it. So you're practically writing and talking continuously, engagement is there. Once you have introduced the company, don't come to the points which we normally, make list of, that what all is required to be a distributor. To connect both the points, we immediately come and talk about how big the company is. Mention about the company's turnover last month. And what I'm writing here can be done for next 2, 3, 4 months. So just mention that, last month the company sold 30,000 machines. So if I average out the cost, the smallest machine being 2,18,000 and the biggest one being almost 4 lakh, I can average around 3 lakh, which means the last month revenue generated was the first amount, the first count multiplied with the amount, it is 900 crores. Isn't it a big amount? You and me are still not selling. We are not talking about it. You were not even aware about it because you have not seen the product anywhere being marketed across, but still the company is generating a big revenue. Now, if you want such big companies distributorship, what do you need? What all would you need to do? So I write it roughly on a side. This is my second point. My third step would be list the requirement with probing. कि अगर आपको इतनी बड़ी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए आज की डेट में, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा. लिस्ट डाउन द पॉइंट्स. जब आप पॉइंट्स लिखेंगे, उसके लेफ्ट में थोड़ी सी जगह छोड़ते जाना, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से नहीं लिखने हैं. पहली चीज, आपको एक अच्छा सा डिपॉजिट देना पड़ेगा क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए. आपको अपना एक ऑफिस भी चाहिए होगा, और अगर आपको स्टॉक रखना है, बिकॉज यू नो व्हाट प्रोडक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ प्रोडक्ट विच नीड्स टू बी स्टोर्ड. आपको एक वेयर हाउस भी चाहिए होगा. स्टॉक कंपनी डिसाइड करेगी एटलीस्ट इतना मेंटेन करना है. कुछ स्टाफ भी रखेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी होंगे. फिर कंपनी आपको एक टारगेट भी देगी. इतनी बड़ी कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको दे रही है, तो बिना टारगेट के तो देगी नहीं. और सबसे बड़ी बात यह है, कंपनी आपको ये हर महीने टारगेट को बढ़ाती है कि अगर आप आगे अपना काम बेटर 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 करते जाएंगे, देन यू विल हैव बेटर ग्रोथ विद अस, बेटर कमीशंस और सेल्स अर्निंग यू विल हैव विद अस. लेकिन अगर किसी भी वजह से आप थोड़े टाइम के लिए अपने बिजनेस से आपका ध्यान हट जाता है और आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रह जाते, तो कंपनी डी रैंकिंग भी करती है कि अभी आपकी जगह हम किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को
डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देते हैं, यू आर नॉट वर्किंग वेल इनफ इन योर एरिया, डी रैंकिंग भी होती है। और जब इतना सारा कुछ है तो आपको थोड़ा सा क्रेडिट डेबिट भी होता है। हो सकता है कंपनी आपको, जिस बड़ी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, क्रेडिट लेने को कहे तो कई बार कस्टमर्स भी वही फॉलो करना चाहते हैं, पार्शियल पेमेंट्स हो रही हैं, हिसाब मेंटेन करना पड़ता है ना ये सब। So here if you see I have just wrote down the points, and जितना प्रोबिंग के साथ करेंगे उतना ज्यादा एंगेजमेंट रहेगा। ऐसे टाइम पे जो एक चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, जो शुरू शुरू में मेरे साथ भी हुई, जैसे हम लिखना शुरू करते हैं ना, दिमाग में होता है अच्छा 7 पॉइंट्स थे, कोई भूलना नहीं चाहिए, तो हम सामने वाले के बोलने का वेट नहीं करते, हम कोशिश करते हैं अच्छा बताइए क्या क्या चाहिए, वो 2 मिनट सोचने में लगाता है और हम लिखना शुरू हो जाते हैं, और एक बार जब हम लिखना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो नहीं बोलते। Here my suggestion is make sure they are engaged, let them give any at least 2 point of all out of all these, and then you can continue, because हम probing का भी वेट नहीं करेंगे, हमारा टाइम जाता है, but at least let them say 2 points, फिर एक engagement आ जाता है। The moment they have said all these things, tell them the good news is to become a distributor of our company, you just need to be a customer and the company will make you distributor. The day you connect with us, for us customer is a distributor, because company knows the moment you have the product, आज नहीं तो कल आप इसके बारे में बात जरूर करेंगे, आप इसे प्रमोट जरूर करेंगे। जब आपने ये कस्टमर इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटर कहा, देन स्टार्ट एडिंग नो टू ऑल योर पॉइंट्स, कि हमारी कंपनी के साथ नो डिपॉजिट, नो ऑफिस, नो स्टॉक, नो स्टाफ, नो टारगेट, नो डी रैंकिंग, नो क्रेडिट डेबिट। दिस इज समथिंग ऑप्शनल। लास्ट में आप देखेंगे एक स्टार पॉइंट है, मैं हमेशा लास्ट में एक स्टार पॉइंट लिखती हूँ और उन्हें बोलती हूँ एक और स्टार पॉइंट है विच आई कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करूंगी। उसके 2 रीजन है। आई पर्सनली फील कि एट दी एंड जाके कुछ एक स्पेशल बताने को होता है, और जब हम एक स्टार पॉइंट मेंशन करते हैं ना, उनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि कुछ ऐसा है जो इन सब से भी अच्छा है, लेकिन लास्ट में पता चलेगा, सो यू गेट अ लिटिल मोर अटेंशन फ्रॉम देम। सो हियर यू कैन सी आई रोट ऑल द पॉइंट्स, लेफ्ट प्लेस इन द लेफ्ट, एंड देन आई राइट ऑल द नोज। ये जो 2 लाइंस दिख रही हैं वो मैंने सिर्फ 5th और 3rd स्टेप को सेपरेट करने के लिए लिखी है। हम लाइन ड्रॉ नहीं करते, हम सिंपली नो 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 सबके आगे लिखते जाते हैं। नेक्स्ट, अब हमें आना है प्लान पे। सो द प्लान आई एम गोइंग टू टेल यू इज कॉल्ड 8-point ग्लोबल पेटेंटेड बिजनेस प्लान। प्लीज मेक श्योर कि आप ये पूरा सेंटेंस लिखें और उसके बाद एक एक पॉइंट को डिस्कस करें। व्हाट डू आई मीन बाय 8 point is something I'll explain you going ahead. Global, I'm saying because once you have become a distributor with us, all across the globe, you can promote the product, और जब भी आपके कहने पे पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कोई प्रोडक्ट लेता है, you will get the commission in your account right in your own city. Patented. When I say the business plan is patented, that means no other company can copy our business plan, and at the same time, no matter how big we grow, our own company cannot change the plan. क्योंकि एक ये क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आज ये प्लान जो भी आप बता रहे हैं बहुत अच्छा है, थोड़े टाइम बाद अभी कंपनी और बड़ी होती जाती है तो फिर ये लोग प्लान चेंज कर देते हैं, फिर इतनी अच्छी चीजें नहीं मिलती हैं, इतना अच्छा कैशबैक नहीं मिलता है, कमीशन नहीं आते हैं। तो यहाँ हम पेटेंटेड वर्ड में हाईलाइट करके ये भी बताते हैं दैट कंपनी इज ऑलरेडी since in the market since very long time, and their plan is patented, which means nobody can copy, and they will also not being able to change the plan. It will remain same no matter how big sales you're making. Next, mention the model. Before we start into the direct sale hierarchy, always mention the model which you're talking about. Mention that the plan structure I'm going to explain to you will be explained for ST501. It's our flagship model. अगर 100 मॉडल्स बिकते हैं तो 85 ये होते हैं, और जो भी मैं आपको कमीशन बता रही हूँ, दैट विल बी कमीशन स्ट्रक्चर विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन, एंड इट मे इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द मॉडल सोल्ड. That's it. Detail में नहीं जाना, just mention this sentence. So I always write the plan I'm telling you is 8-point global plan, and the model is this. It should be reflecting on your paper. Now when we come to the increase in the promotion levels of distributor and increase in the commission, when you start writing, I find it effective and I use it this way, that initially just talk about the growth, not the numbers required to grow. So here I simply say that हम लोग साड़ी लेने भी अगर जाते हैं तो हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं 2-3 लेडीज इकट्ठे जा रही है, अभी हम 5 साड़ी ले रहे हैं ना भैया, ज्यादा डिस्काउंट दीजिए.
कंपनी सोचती है अगर आपका मार्केट में आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा शो करते हो, यू विल बी लायबल, यू विल बी एलिजिबल टू गेट मोर मार्जिन. सेम वेज हमारी कंपनी कहती है हमारे डिफरेंट प्रमोशन लेवल्स में अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और जैसे जैसे आप अपने वर्क शो करते हो, आप सेल्स बढ़ाते हो, वी विल कीप ऑन प्रमोटिंग यू. Always start writing from downwards and then keep moving up. So you will say that at the initial level, you will start for one sale. When somebody buys a machine ST501 on your suggestion, on your promotion, they will spend 2,77,000. Company will pay you 13,000. After a certain level, once you get your promotion, you're doing a decent count of number and you're promoted. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, then हम लोग ऐसे प्रोबिंग कर सकते हैं कि अच्छा आपके हिसाब से जब प्रमोशन होती है तो कितने % इंक्रीज होना चाहिए. कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, then I don't ask such questions and I only tell them we are part of a very good company wherein once you are promoted, the company simply doubles your commission. At 2A level it is 26,000. By the time you go to third level, which is 3A level with more number of sales, it increases to 39,000. And if you notice here, हम लोग 13 का table ले रहे हैं. There is next promotion to 4A level, which is giving you a cashback of 52,000 per machine. Then another level is 5A, and the top level, which is the first milestone, is 6A level. And after this, for rest of the life, you will get 78,000 per machine. Once you have told these things, take a pause, look at the person, that they are listening, they are attentive. Then we start mentioning the pointers. This is the image wherein exactly parallel to that I start writing. For 13,000, the moment you make first sale, you will get 13,000. The moment you make second sale, again you will get 13,000. But the way you have made third family healthy, company realizes, oh, this person is talking, this person is genuinely promoting. They immediately promote you to encourage you, and you will come to 2A level. Now, for next 8 machines, you will get 26,000 per machine. Once you have done 10 machines in total, with your 11th machine, you will be promoted to 3A level and you will be getting 39,000 per machine. यहाँ एक और अच्छी चीज होती है, जिस दिन आप 11th मशीन पे पहुंचते हैं, अगर आप ये 13,000 और 26,000 का टोटल करते हैं, 11th मशीन पे आपकी मशीन फ्री हो जाती है. Isn't it a good thing? अच्छा, do you have GST? अगर आपके पास GST है तो आपको 18% वापस मिल जाएगा. इसका मतलब आपकी मशीन तो 10th पे ही फ्री हो जाएगी. और उसके बाद जिस दिन जब आप 3A लेवल पे हैं, for next 10 machines, each machine will fetch you a benefit of 39,000. That means ये सिर्फ 10 मशीन में ही 3,90,000 is your profit. और आप कर क्या रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, you're picking up your phone and you're inviting people to see an amazing product. Product sells itself. True. Then the moment you are done with next 10 machines, that is your total is 20, you are promoted to 4A level, and from this level, each sale will fetch you 52,000. Make sure that you always mention here आधा लाख. इमेजिन कीजिए कि अगर आप पूरे महीने में, आप ऑलरेडी एक अच्छे प्रोफाइल में हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अगर वीकेंड टू वीकेंड भी हम मीटिंग करें, या आप कहें नहीं मैं हर हफ्ते थोड़ी ये काम कर सकता हूँ, आप महीने के 2 वीकेंड ही मिल लीजिए. अगर आप 2 वीकेंड्स पे मुझे 4-5 लोगों से मिलवाते हैं, मैं महीने में 10 लोगों से मिल लेती हूँ, उनमें से 2 लोगों ने भी मशीन ली, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो 1 लाख रुपए की नेट इनकम आपके पास आ रही है पार्ट टाइम. क्या करके? This sounds very good. So always make sure at 4A level you're taking a pause and you're mentioning this. Then I always make sure that I mention that for 30 next machines, that is from 21st to 50th machine, you're getting this amount. So rough 15 lakh तो इन 30 machine इस level के बाद आपके पास आता है. Next 51 से 100 machine तक आपको 65,000 आएगा. And the day you have done your 101st sale, you will achieve the first big milestone for a distributor. You will be now a global partner who's acknowledged at an international level. And the life changes from here. And for when I'm sitting here with you, I assure you that in case you take this opportunity as a serious business opportunity, I'll be there to help you, to support you, to guide you, to reach this milestone. Isn't it good? After this step, we move on to next level.
But while you're talking about these things, make sure that you don't miss talking about the first promotion after 2 sales, because the company is appreciating your effort. Mention that machine becomes free after 11 sales or after 10 sales if GST is claimed. Always mention once 4A level is achieved, they earn half a lakh for each sale. Now my next step will be, अभी डायरेक्ट सेल की बात हो गई, दिमाग में चल रहा है ओके अभी इनडायरेक्ट सेल बतानी है, पर इनडायरेक्ट सेल पे नहीं आना. इसी स्टेप पे मेंशन करेंगे हम कि आपकी जो ये 100 सेल है, आपको पता है जब हम ये सारे अमाउंट्स को टोटल करते हैं ना, सिर्फ पहली 100 सेल का यू अर्न 54 लाख. आप 3 लाख मशीन का निकाल भी दे तो 51 लाख इज योर नेट इनकम विद मेकिंग 100 families healthy. And in fact, at the same time, you can tell them, sir, how you're planning to, in case when you go for this machine, in case bhi nahi, always talk in positive sentences. So when you go for this machine, so would you like to have a EMI option or you like a one go? Even if you see they are thinking, continue. Avoid any break or pauses. Just tell them. So वैसे तो किसी भी बड़ी चीज के लिए हम लोग नॉर्मली मोबाइल भी आज की डेट में लेते हैं तो EMI लेते हैं, गाड़ी भी लेते हैं तो EMI लेते हैं. तो in case even if you go for EMI, I tell you one interesting thing, that there are people who take it on EMI and actually start promoting for practically they never pay anything from their account. उनके लिए ये मशीन शुरू से फ्री हो सकती है. And then at this step explain them. So for example, आप पर्सनल लोन लेते हैं. अगर आपने पर्सनल लोन लिया तो 4 साल की आपकी अगर आपने EMI बनवाई है तो अप्रोक्सीमेटली आपकी EMI बनेगी 7,500. पहले महीने में भी EMI तो 1 महीने बाद आनी है ना. अगर आपने पूरे 1 महीने में एक भी फैमिली हेल्दी की, यू आर अर्निंग 13,000. दैट मीन्स आपकी अगली 2 EMI तो सॉर्टेड है, आपकी जेब से नहीं जाएंगी. अगर आपने गोल्ड लोन लिया है, पर्सनल लोन नहीं लेते हैं, तो उस केस में EMI, क्योंकि हम सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं, इट्स अराउंड 2,500 पर मंथ फॉर अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज. द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप इस बिजनेस को सीरियस ले रहे हैं और आप इसको ग्रो फास्ट करते हैं, यू कैन ऑलवेज एंड अप रीपेइंग इट फास्टर. देन देयर आर पीपल हु से नहीं नहीं हमारा तो ऑलरेडी होम लोन चल रहा है. सो बेस्ट फॉर दोज हु हैव होम लोन, दिस इज द बेस्ट थिंग. अगर आपने अपना सिबिल मेंटेन अच्छा किया है, आपकी पेमेंट्स रेगुलर है सर, you can go for a home loan top up. The best part is increase in your EMI would be barely 2,500, and even if you make one family healthy, practically your next 5 EMIs are paid. Then there are certain people who say नहीं नहीं already बहुत EMIs चल रही हैं. ऐसे में हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप गोल्ड लोन या होम लोन से जा रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप अभी करंट जो आपको बर्डन लग रही है ऑलरेडी EMI, उसमें सिर्फ एक 2-2.5 हजार बढ़ाइए, लेकिन आप 2-2.5 के सामने एटलीस्ट 13,000 अर्न कर रहे हैं फॉर वन सेल. दैट मीन्स मे बी दिस कैन हेल्प यू पे बैक योर अदर EMIs ऑल्सो. एंड जहां आप 13 के बाद 26 पे आते हैं, देन तो सर इमेजिन यू कैन इवन गो अहेड एंड क्लोज योर लोन ऑल्सो, sir or madam, whoever you're talking to. So just before you go to indirect sales, always at this level only talk about the total amount which can be earned with 100 sales, and also how if they are going for EMI, they're practically never paying anything from their pocket. After this, we also talk about, sir, what do you think, how long will you take to make 100 sales? It's like 100 families. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में, हाँ मतलब 2 साल 3 साल 4 साल, some people say 5 years. Just listen to them. Then always tell them, sir, मैंने आज आपको जैसे कहा, आपकी मशीन 11 सेल्स में फ्री हो जाएगी एंड आई एम देयर विद यू. आपके लिए वंस यू हैव गॉट द मशीन, हम लोग 10-15 दिन में कनेक्ट करेंगे, आप प्रमोट करना शुरू कीजिए, लेट्स हैव वीकेंड मीटिंग्स एंड लेट मी हेल्प इट बी प्रमोटेड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. मैंने आपको बोला ज्यादा नहीं तो कम से कम आपकी मशीन फ्री कराने तक तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ. अगर मैं आपको ये कह रही हूँ तो आपके साथ जो 10 या 11 लोग जुड़ेंगे, सेम बात मैं उन्हें भी बोलूंगी. आज आपने अगर किसी एक फ्रेंड को मशीन दिलवाई, आई विल स्टे इन टच विद देम, आई विल हेल्प देम आल्सो. यानी अगर आपके 11 लोगों को मशीन देके मैंने आगे 11 लोगों को दी, सपोर्ट किया ओवर द पीरियड, जितना भी टाइम लगे, साल लगे 2 साल लगे, बट इट विल बी मच फास्टर. यू कैन अंडरस्टैंड इट्स मल्टीप्लिकेशन. रीचिंग अकाउंट ऑफ 121, और मे बी आपका GST है, हम लोग एक एवरेज मिनिमम भी मान के चले तो 10 into 10 भी हमारा 100 होता है. आपके 10 लोग और फिर उन 10 लोगों को मशीन फ्री कराने के लिए अगले 10 लोगों के साथ अगर मैं कनेक्ट करती हूँ, isn't it achievable? The person will agree. Yes.
100 लोग सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन 10 लोग अपने फ्री मशीन कराने तक और फिर उन 10 लोगों को भी उनकी मशीन फ्री कराने के लिए आकांक्षा हेल्प कर रही है, ये सोचना आसान लगता है. दैट मीन्स इट इज अचीवेबल. एंड नाउ, अभी मैंने आपको क्या बोला, आपकी मशीन और फिर उनकी भी मशीन, यानी कुछ तो इनडायरेक्ट भी है. नाउ हियर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट सेल. नॉर्मली आई ड्रॉ अ छोटू सा ऐसे चार्ट हियर. सर ये आप हैं, ये आपके 10 लोग और हर इंसान के 10-10 लोग, यानी 10 into 10 100 सेल्स, तो अचीवेबल है. नाउ वी मेंशन, कंपनी ये कहती है कि आपने आज मशीन ली, आपने किसी और से बात की, तो जरिया तो आप ही बने ना, तो वो आपकी इनडायरेक्ट सेल को भी काउंट करती है. कंपनी कहती है आपकी डायरेक्ट सेल प्लस आपकी इनडायरेक्ट सेल इज योर ग्रुप सेल. Now I'll explain you how you can grow faster, do much better when we concentrate on group sales. Now at this step, mention the group sales, indirect sales stepwise. मैं यहाँ steps में नहीं जा रही हूँ. We all know that. I'll just highlight pointer which I utilize to make my indirect sale sound more effective. और वो फिर प्लान नहीं लगता, ऐसे लगता है हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं. यहाँ पे हमेशा उनका नाम लिखिए, जिनको भी आप डेमो दे रहे हैं ना, यहाँ पे किसी का एबीसी नाम नहीं आना चाहिए. ऑलवेज मेक श्योर आप उनका नाम लिखिए. सर ये आप यहाँ पे हैं. उसके बाद पहला स्टेप, पहले 4 लोगों का जब नाम पूछना है ना, आप अपनी तरफ से कोई नाम नहीं लिखेंगे, उन्हीं से पूछिए, सर आज आपने मशीन ली है, आपके हिसाब से आप पहले किसको बताना चाहेंगे. पर्सन विल थिंक, दैट मीन्स आपने इमीडिएटली सोचना चालू करवा दिया है, पॉजिटिव सोच पे, ट्रैक पे इंसान को डाल दिया. हाँ मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, उसको दूंगी. द मोमेंट दे से प्रिया, राइट, ओके, तो प्रिया मैम आएंगी 1A लेवल पे, वो आपकी फर्स्ट सेल होंगी. और जब प्रिया जी की सेल कंप्लीट होगी, उनके घर मशीन आ जाएगी, तो कंपनी आपको देगी आपकी फर्स्ट सेल का 13,000. अच्छा उसके बाद किसे बताएंगे. मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है, कपल होते हैं, तो एक हस्बैंड से पूछा तो अगला वाइफ पूछे, अच्छा मैम आप बताइए नेक्स्ट आप किसे देंगे. नेक्स्ट नेम भी उन्हीं से लीजिए. दे स्टार्ट थिंकिंग, ओके जब उन्होंने मशीन लिया, ये आपकी सेकंड मशीन है, प्लीज मेंशन द काउंट. जैसे ही रीता जी ने मशीन लिया, आपको उसका भी 13,000 आएगा. चलिए अब आप थर्ड मशीन किसे देंगे. दे विल गिव यू अ थर्ड नेम. जैसे ही आपने थर्ड मशीन लिया, आपका प्रमोशन हो गया है 2A लेवल पे, ये आपकी थर्ड सेल है. और इस मशीन के लिए जैसे ही कृति ने मशीन ली, उनका सेल कंप्लीट हुआ, मशीन उनके घर पहुंचती है, आपको उसके लिए 26,000 रुपीज आएंगे. इजंट इट गुड. कंपनी हैज प्रमोटेड यू विद योर थर्ड सेल. अच्छा आप अभी बात कर रहे हैं और लोगों से, लेकिन ऑफकोर्स प्रिया मैडम भी तो बात करेंगी ना. जिस दिन प्रिया जी ने ऋषि को सेल दिया, फॉर एग्जाम्पल, अभी आप नहीं जानते ऋषि कौन है, इसलिए मैं रफली नाम लिख रही हूँ, उनके किसी फ्रेंड ऋषि को दिया, वो आपकी कंपनी एज अ ग्रुप सेल फोर्थ सेल काउंट करेगी और आपको उसका कितना मिलना चाहिए. यहाँ पे अब नाउ अगेन डिपेंडिंग ऑन योर टाइम 2 तरीके हैं. या तो आप खुद से बता दीजिए टाइम अगर कम है कि क्योंकि आपकी 1A लगे 13 आएगा, नहीं तो अगर हमारे पास टाइम रहता है और सामने वाला फुर्सत से कनेक्ट कर रहा है, प्रोबिंग कर रहा है, वी कैन ऑलवेज से आपको कितना मिलना चाहिए, आपको 13,000 का कितना % आना चाहिए. द बेस्ट पार्ट इज कंपनी आपको भी 13,000 दे रही है. लेकिन किसी किसी जगह ऐसा भी होता है जहां टाइम का क्रंच होता है, देन आई ऑलवेज से the best part is companies, since companies count, not only counting your indirect sale, companies appreciating and benefiting you also. आपको ऋषि का भी आएगा 13,000. ऋषि आगे रिनी को अगर मशीन देते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं है, उनका भी 13. और ऐसा करते करते आपको अराउंड 8 पॉइंट्स तक ये सेल आएगा. कीप राइटिंग द काउंट ऑफ सेल एट ईच स्टेप. अच्छा इसी टाइम पे आप, रीता जी ने भी बात की, रीता ने कुछ 5 और 6 2 लोगों को मशीन दी. मैं यहाँ 4 नाम उनसे लेती हूँ, 2 नाम अपनी मर्जी से डालती हूँ, फिर उसके बाद से सिर्फ नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज वी डोंट वांट टू राइट डाउन नेम्स. ओके मान लीजिए रीता जी ने 2 लोगों को मशीन दी, जो आपकी 6th और 7th सेल है, आपको दोनों का 13,000 आएगा क्योंकि ये आपका 1A लेवल है. आगे 7% जो भी है वो भी आगे सेल करे. मे बी आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पसंद करे और आगे काम करना चाहे. 7th person भी आगे अगर 2 लोगों को मशीन देता है, while going down you will keep earning 13,000 for your 1A sales up till 8 points. Make sure कि गलती से भी आपके मुंह से 8 लेवल नहीं निकले. Always mention it's up to 8 points. अच्छा जब तक ये सब हो रहा है, आपकी कृति मैम है जो आपकी फ्रेंड है, उन्होंने अगर किसी से बात की, उनकी सेल पे आपको कितना आएगा. यस क्योंकि कृति मैम 2A लेवल पे हैं, वो आपकी 2A डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको उनका भी 26,000 आएगा. अच्छा मीनवाइल
इतने में बात करते करते आपकी भी एक सेल आ जाती है। आप यहाँ नोटिस कीजिए, हमारे बात करते करते आपका अभी रवि जी के बाद किसी और से बात नहीं हुई है, या पेमेंट में टाइम लग रहा है, कोई लोन लेने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपकी नेक्स्ट सेल आने से पहले पहले ही अगर इन्हीं लोगों के बीच में 10 सेल कंप्लीट हो जाती है, कंपनी आपको नेक्स्ट सेल पे सीधे प्रमोट करेगी 4A लेवल पे, क्योंकि आपकी यहाँ पे 10 सेल्स कंप्लीट हुई। सॉरी, कृति की सेल के बाद रवि की सेल जब आपने डाली, क्योंकि आपकी यहाँ कृति के साथ साथ 10 सेल्स कंप्लीट हो गई हैं, रवि चाहे आपके लिए चौथे इंसान है, आपके नॉलेज में आपके सर्कल से सिर्फ चौथे इंसान है, लेकिन क्योंकि टोटल में 11th सेल है, यू विल गेट योर प्रमोशन फॉर योर डायरेक्ट सेल एंड यू विल बिकम अ 3A. फॉर रवि सेल यू विल गेट 39K एंड इवन फॉर सब्सिक्वेंट पीपल अप टू 8th लेवल. इसी तरह जब आप यहाँ तक आ जाते हैं, मेक श्योर दैट योर पोस्ट 3A लेवल यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप सेल्स ओनली. दैट इज 20 सेल हो गई तो आप 4A लेवल पे आ जाएंगे, 50 सेल्स हो गई तो आप 5A लेवल पे आ जाएंगे, और इस तरह जिस दिन आपने ऐसे पूरा 100 सेल कर लिया, यू विल बी प्रमोटेड टू 6A लेवल. नाउ 6A लेवल इज द फर्स्ट माइलस्टोन. इसके बाद से आप जितनी भी डायरेक्ट सेल करते हैं, फॉर ईच सेल यू विल गेट 78,000 पर सेल. ऐसे स्ट्रक्चर में आप 6A के नीचे ही बेनिफिट्स लिख सकते हैं क्विकली. Each sale is getting you 78,000. My next point is, company will, since it is the first milestone, you will have a global recognition. Company will acknowledge you, identify you as a global partner. To appreciate you, they will give you a bonus of $3,000, one-time bonus. एंड सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ मैंने अभी तक आपसे बात की थी कि आपको 8 पॉइंट्स तक यहाँ बेनिफिट आता रहेगा. ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद नीचे अगर 8 पॉइंट्स के बाद भी कुछ सेल जा रही है, 8 लेवल्स नीचे जाने के बाद, 8 पॉइंट एग्जॉस्ट होने के बाद भी कुछ सेल्स जा रही है, आपको उसका भी बेनिफिट आना शुरू होता है. बट दैट्स अ लॉन्ग थिंग, वी कैन डिस्कस दिस अबाउट लेटर. इतना सेंटेंस कह के आगे बढ़ जाइएगा ताकि कोई नॉन एटी की डिटेल नहीं पूछे, कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा. पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बट यू कैन सिंपली मेंशन कि एक बेनिफिट ये भी है कि उसके बाद लोअर लेवल तक डीप डाउन 8 पॉइंट्स के बाद भी आपको बेनिफिट आता है. एंड उसके बाद से आपकी लाइफ का एक बिगर जर्नी स्टार्ट होता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज जस्ट द फर्स्ट माइलस्टोन, बट वी विल डिस्कस दैट वंस यू हैव इंस्टॉल्ड द मशीन एंड यू स्टार्ट प्रमोटिंग. यहाँ पे आके आई मेंशन द स्टार पॉइंट. आप यहाँ पॉज लेके डिस्कस कर सकते हैं, कैसा लगा आपको. नाउ डू यू थिंक इट इज डुएबल? आप सारे सेल्स खुद नहीं कर रहे हैं, वी कैन ऑलवेज डिस्कस हियर कि आप, अगर हम यहाँ पे प्रमोट करते हुए उन लोगों से जुड़े जो आगे बिजनेस में भी इंटरेस्टेड हैं, तो क्या ये आसान हो जाएगा? यू कैन हैव अ लिटिल कन्वर्सेशन बिफोर गोइंग अहेड. आई नॉर्मली डू इट विच हेल्प्स मी क्लोजिंग. सो मतलब आपके साथ जब मैं जुड़ रही हूँ, हम हर तरह के लोगों को ढूंढेंगे. हम ऐसे लोगों को भी ढूंढेंगे जिन्हें सेहत चाहिए, जो पानी पीते हैं. अब पानी तो सब पीते हैं, यानी हम सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आई विल हेल्प यू आइडेंटिफाई फ्यू पीपल जो बिजनेस में भी शायद इंटरेस्टेड हो. हम कोशिश करेंगे हम ऐसे लोगों को भी अपने साथ जोड़े सर, so that you have more of indirect sales along with your direct sales and you will be able to achieve your milestone faster. Isn't it good? Amazing. Then I would also like to mention the star point. You remember I spoke about a star point earlier. Here I have the whole structure. Now I talk about the star point, that this company, along with all the benefits, give a benefit that if today you are working with me, we both are working together along with whatever you're doing, even part-time, and you build this business wherein you ensure that you're not only looking for end users, but also people who are interested in doing work for you, and they'll build up your team. The company says, God forbid if something happens to you, or even if happily you live your entire life, once you are, going to the God, your business, which is set up with a lot of effort, goes to your legal here. For me, I look at it as an assurance for family. लोग आज की डेट में, यहाँ मैं हमेशा mention करती हूँ. Now, up to you individually how you want to go about it. I'll just say how I talk about it. I say for me, this point is the star point, which actually made me leave my career behind and full-time come into this, because I know with my current job, I had a good insurance also. हम लोग इंश्योरेंस लेके लेते हैं, गॉड फॉरबिड मुझे कुछ हो गया, कैश अमाउंट, सर्टेन अमाउंट मेरी बेटी को मिल जाएगा, मेरे बच्चे के लिए, मेरी फैमिली के लिए. लेकिन वो कैश अमाउंट लिमिटेड होगा. फॉर हाउ लॉन्ग इट विल लिव.
This company gives me an option to assure the security of my family, not only in terms of health but also wealth. आज मैं काम कर रही हूँ, जब तक मैं हूँ मैं अपनी टीम बिल्ड करने पे वर्क करूंगी, मैं लोगों से जुड़ने पे वर्क करूंगी जो आगे मुझे इसे प्रमोट करने में हेल्प करें. तो गॉड फॉरबिड अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, my legal, the entire business goes to my legal here. And if she wants to be fully involved, good. Even if she's partially involved, I will leave an assurance to take care of her wealth as well as health. This is assurance. Now friends, I'm sharing a quick page here how it looks like. So normally we suggest that you use 2 separate pages to explain the business. As I mentioned, I'm just putting it all across how my business plan looks when I finish it. I always start with my first point that I mentioned about the company's name and everything, then about the total revenue generated last month. Then I come to the third point wherein I talk about the pointers, what would be required if I want a distributorship of such big company. Then from here, I move to the fact that a customer becomes a distributor. And once I say that you just need to be a customer, I start writing all the no's here, which is my 5th point. After that, I say the plan which I'm going to explain you is a 8-point global patented business plan. Explain each term. The model which I'm talking about is this. Then I only mention the levels. After these levels, I start discussing the promotion count of machines required for each promotion. Here only when I'm sitting and talking about these monetary benefits, I write that 54 lakh is something which is earned once you complete 100 sales. And just when we are on this pointer, looking at here, I mentioned that, see, 13,000 is what you earn even with your first and second sale. That means even if you're going for an EMI option and start promoting the machine with me and start closing your sales, you are never paying anything from your pocket. Then we move to the next point where we want to connect the direct sales to indirect. I tell them today, even if you're not interested in the long-term business, I'm sure you would be interested in making your machine free. I'll first help you to make your machine free, then all those 10 people or 11 people to make their machine free. That means even if a little genuine effort is done from your side and all of them, 100 sales is very much achievable. How? Because the company has a system of direct sales plus indirect sale is equal to group sale. From here, I start writing it. And then at the end, I talk about my legacy point. I hope it is all clear till now. I'll summarize few points which are important to remember when you are doing all these things. With my personal experience, I have been doing demos since last 1 month and going and talking to a lot of people. It is always beneficial if you carry a A4 size white paper to be used along with you. क्योंकि कहीं कहीं ऐसे होता है आप उनसे पेपर मांगो, वो आपको कोई छोटा सा नोटबुक पकड़ा देते हैं, न्यूज़पेपर दिया उस पे ब्लैंक पेज है, उनका ऑलरेडी कोई एक इंपॉर्टेंट पेपर है उसके पीछे छोटी सी जगह दे दी. वी डोंट वांट इट टू बी डन लाइक दिस. इट विल लुक मोर प्रोफेशनल इफ यू कैरी अ A4 size white paper, or simply it's a suggestion, you can buy a A4 size notepad. Always explain the plan, clear the page and leave it with them. Next, very important, जब हम बिजनेस प्लान बताना शुरू करते हैं ना तो हमें टेंशन होती है. जैसे स्टार्ट किया और डेमो भी फिर भी कॉन्फिडेंस बहुत लोगों में आ गया. जब बिजनेस प्लान बताते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है ओके पॉइंट्स याद है, इसके बाद ये करना था, ये करना था, ये करना था. टेंशन होती है यहाँ. अगर आप जल्दी करेंगे कि हाँ जल्दी जल्दी सब पूरा कर लूँ, इट विल नॉट गिव एन इम्पैक्ट. द मोमेंट आई से आई एम नॉट टेलिंग द प्लान एंड आई एम सेलिंग द प्लान, वी नीड टू रियलाइज. आप पहले अगर रोज घर पे प्रैक्टिस करें ना, आपको हर स्टेप के बाद अगला स्टेप अपने आप याद आता जाएगा. नेवर हरी टू एक्सप्लेन द प्लान. इनफैक्ट अब जो हम अप्रोच कैरी कर रहे हैं एज अ टीम, अगर आपने सुना हो सुदेशी क्लियरली कहते हैं try to make your demo complete in 30 to 35 minutes and give at least 30 minutes for business plan. Because personal experience से मैं आपको बता रही हूँ, मशीन जब तक आप बताते हो तब तक मशीन अच्छी लगती है सबको, दिल करता है लेने का, लेकिन लगता है अपनी पॉकेट के बाहर है. ये बिजनेस प्लान ही है अगले 30 मिनट जो उनके दिमाग में ये बिठाएगा नहीं नहीं ये हम ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी मच इन आवर बजट, वेरी मच फिजिबल फॉर अस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू आर नेवर डूइंग एनी हरी.
when you're talking to them. Make sure that you're maintaining a feasible pace, यानी बहुत गैप भी नहीं आ रहा जिसको हम ब्लैंक पॉजेस बोलते हैं, और ना ही आप बहुत तेज जा रहे हैं. जब आप बात कर रहे हैं थोड़े से पॉइंट्स लिखे, एक पॉज लेके लुक इनटू देयर आईज दैट दे आर लिसनिंग. You'll be able to gauge their facial expression also, whether they're liking it. And when they're liking it, you really love it. I tell you what happens with me when I'm writing. Of course नीचे देख के लिख रहे हैं, बीच में जब पॉज लेके ऊपर देखो तो आप एक चीज नोट करोगे, वो इंसान जो ऐसे बैठ के डेमो देख रहा था वो प्लान पे ऐसे 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 आगे आ जाता है. It gives a lot of confidence and a good feel, and then you will feel nice. So make sure that you're writing on the paper but you're maintaining a good eye contact. And very important, write it in a decent handwriting. I'm not commenting on anyone, मेरी भी आपने देखी writing है, but थोड़ा readable रहे. हम लोग जब टेंशन में लिखते हैं तो कई बार राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है. हमें ये याद रखना है कि जो हम प्लान समझा रहे हैं ना, और वो पेपर उनके पास छोड़ के जा रहे हैं, वो बाद में उसको उठा के आराम से पढ़ने वाले हैं. तो जस्ट रीडेबल लेवल पे और ऑर्गेनाइज हमने ऐसे करना है कि वो रीडेबल रहे और आपकी राइटिंग ठीक हो. It's a suggestion that you, if possible, use 2 different pages. डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट समझाने के लिए तो आप खुला खुला लिख पाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. प्रैक्टिस बिजनेस प्लान रेगुलरली एट होम. मैंने जैसे आज कहा कि ये सारे के सारे पॉइंटर्स हैं, 15 पॉइंट्स में मैंने पूरे उसको डिवाइड किया है. आपको लगेगा माय गॉड आकांक्षा 15 पॉइंट कह रही है, अभी याद कैसे रहेंगे? लेकिन अगर आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, आई प्रॉमिस यू विद इन 2 days यू विल बी लाइक अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है. तो बड़ा कॉमन सेंस वाला सीक्वेंस है, इसके बाद तो यही आना चाहिए, इसके बाद तो यही आना चाहिए, और बात करते करते फ्लो बन जाता है अगर हम ये पॉइंट्स कर रहे हैं. नाउ अगेन रिमेंबर, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, you are not telling business plan, you are selling the business plan. Your tone, your expression, the way you are going about it, the conversation you're doing shows it. And जब आपने ये सब किया, सबसे important लास्ट में पूछना भूलिएगा नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ. तो सर हाउ वुड यू लाइक टू मेक द पेमेंट एंड ब्रिंग द हेल्थ होम? आप डाउन पेमेंट करेंगे या ईएमआई? क्योंकि ईएमआई करेंगे तो मशीन प्रैक्टिकली आपके लिए फ्री है. द पर्सन विल से ईएमआई. Okay, sir, what type of EMI? You'll go for a personal loan, or you have a housing loan, or maybe gold loan? What loan you would like to go? हम लोगों का सबसे बड़ा टेंशन अभी तक यही होता है कि हम कन्वर्सेशन कहाँ से लाएं, चेक की बात कैसे करें, पेमेंट की कैसे करें. इसी स्टेप पे कॉन्फिडेंटली सी आपकी पूरी बिजनेस प्लान बताने की मेहनत, ये जो लास्ट का पॉइंट है ना, उस पर समराइज होती है. द मोमेंट यू आर डन विद एवरीथिंग, ऑलवेज आस्क देम. जवाब जो भी आएगा उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है. हम तो यही पूछ रहे हैं, तो सर आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे? अगर आपको बंदा कहता है नहीं नहीं मैं वन शॉट करूंगा, सो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज आस्क सर इफ यू हैव मी देन यू कैन गिव मी अ चेक विद एनी डेट यू वुड लाइक अब आज का डेट का या एक हफ्ते का पोस्ट डेट भी डालना चाहते हैं, यू कैन गिव मी द चेक, यू विल बी एबल टू पिक अप. अदरवाइज ईएमआई है तो देन यू कैन ऑलवेज टेल देम दैट यू नो आई कैन हेल्प यू. So you know somebody who can help you with getting an EMI, or otherwise we also have people with our team, because sir हमारे साथ तो बहुत लोग regularly जुड़ते हैं. We also support them people for their gold loans, their home loans, or even personal loans. So अगर आपको कुछ help चाहिए, we can do that, and then we can finish off. So I end my presentation here. Thank you for your patience. I'm stop sharing and queries from all of you. Kenneth जी आपने बोला can I go one slide back? Which slide you wanted to see? Yeah, Rodney will talk to you. Rodney was also attending, my son. Rodney. Okay. आप लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो क्या, वो ask confidently वाली? हाँ, ask confidently वाली. Just give me 1 second. Let me see if I can move up. ये रहा. बताइए. थैंक यू इसका स्क्रीनशॉट लेना था. ओके थैंक यू अंशिका. You're welcome. I'll stop sharing. Now you all can ask your queries. I hope you find it useful and flow was something which was. Aakanksha, I know it's not important, but still from my side, I want to say excellent presentation. I mean, this business plan
and felt so confident that really, if I learn this step by step, I can also do it. Of course, But ma'am. Of course. first of all, want to praise you that you have really पारंगत हो गई उसमें, PhD हो गई तुम्हारी. All thanks to Rishabh. I've been really Yes, Rishabh, you have observing. really followed step by step everything you have picked up. True, true. Thank you. Aakanksha, you have done a wonderful job. It was really in very simple, small steps. You have made the presentation and the business plan that anyone can do this plan. Only if we practice. Yes, that's Right? the key. That's Because the key. see, we are here, we are teaching you, we are sharing with you tips how to make your business plan more effective. But that effectiveness will not come till you don't sit and practice it on the paper. Right. Because we feel देख लिया हमको आ गया, ना डेमो ऐसे होगा ना presentation ऐसे होगा. Daily you will have to practice it on the paper regularly. Only then your business plan and your demos will become perfect. And we hear how regularly she has been doing. Yes, yes. Day in and day out, every Even day. if you don't have to show the shows. demo, show the presentation, show the business plan to yourself. Right? Because only then you'll become effective. See what happens. We are coming over here on Wednesday. We are seeing it. We are learning it. But it's over there only. We are not practicing it. I had told last time also. Right from the first session, when we spoke about the different types of water, I said, please experiment this at home and share your experiences. I feel hardly 1 or 2 experiences share aaya hai. I told, please make videos of your feedbacks. I have not received any feedback. See, if we are not going to work on this, so we'll never move ahead. The intention of the meeting is that you learn and then apply. Application of the things what we have learned is very important. So if we are not doing that, then just attending the meetings won't help you much. ठीक है, एक बार और हमने डेमो देख लिया, ठीक है, एक बार और हमने बिजनेस प्लान समझ लिया, लेकिन उसके बाद क्या? जब तक आप उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, that effectiveness will not come, that confidence will not come. Why today Aakanksha is so confident? Why today Falu has become so confident? Because regularly she is doing the practices. Even I myself, I have a paper yesterday also. I did my practice for the business plan. So only when you keep on doing, वो numbers, वो percentages, वो figures आपको याद रहेंगे. Otherwise you keep on thinking कि right है कि wrong है, क्या है next, क्या है next. So to avoid all these things, you regularly need to see. And what happens? People see your confidence. You want people to join you. They will see how confident you are. See, we are into people's business and we are into business. आपको सिर्फ डेमो दिखाओगे तो you'll become a salesman. आप मशीन बेचने जा रहे हो. लेकिन when you share business plan, when you share business with them, only then you'll become business partners. How many of you all want to become salesmen over here? किसको salesman बनना है? सेल्समैन बनने आए हैं हम यहाँ पे या बिजनेस करने आए हैं? राइट? हमको मशीन बेचनी नहीं है, हमको बिजनेस पार्टनर्स चाहिए, क्योंकि आप एक मशीन बेचोगे तो थक जाओगे. We want working partners, we want business partners, and business will only come if you show business plan. So demos, I want कि सब लोग demos practice करें. Last time we had shared how to make your demos very effective. Please honestly tell me कितने लोगों ने practice किया है demo करके? How many of y'all have done the demo practices? It has been 15 days. How many times y'all have practiced? I really appreciate those who have done it, but others, please, you have to do it. जो रेगुलरली अपने कस्टमर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डेमोस कर रहे हैं, उनको तो प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन जो नए हैं, जो नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट एट होम यू हैव टू डू इट. है ना? आप अपने नेबर्स को बुलाइए, किसी के साथ भी कीजिए, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस योर डेमोस. है ना? क्योंकि देखिए, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आप परफेक्ट नहीं होंगे,
आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मैं किसी और को दिखाऊं, क्योंकि आपको खुद अंदर से पता है कि आई एम नॉट रेडी. So till you're not ready, the confidence will not come. They will not join you. And see, we are not saying whoever is joining with us, we are ready to help you. We are ready to come with you initially, but you'll have to start taking steps, move ahead, so that you can start helping your teammates. When you go, you show demos, people, your friends, your relatives will join you also. That time you will have to become confident, you will have to become so powerful that you can answer all their queries. And that time it happens that okay, starting में हमारे upline जो है, जो भी हमारे team members है, they'll come and help you. But this is a growing business, so you will have to become self-confident, independent बनना बहुत जरूरी. And yes, if anyone wants to add something, or I would like someone to give a feedback on Aakanksha's business plan. Who would like to give their feedback? Uma ma'am ने तो दे दिया. I'll request someone else also to share their feedback. Yes, Falguni. Please unmute yourself. Yeah, it was really very amazing. और जिस तरह से आकांक्षा ने जो स्टेप बाय स्टेप जो बताया है ना, उसकी मतलब इतना इजी लग रहा है कि जब वो बोल रही थी तब लग रहा था कि जैसे उमा मैम ने बताया, इवन आई फेल्ट कि इस तरह से अगर हम बताएंगे सामने वाले को तो 100% वो ले ही लेगा. मतलब उसके लिए एकदम इजी हो गया. मतलब आकांक्षा ने जिस तरह से मेंशन की हर स्टेप बाय स्टेप, तो उस तरह से बिजनेस प्लान सेल नहीं किया उसने, इतना इजी किया. यस हाँ. तो ऐसे लग रहा था कि सामने वाले को ना बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है. मतलब उसके पास कोई ना बोलने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं बचा है. तो सामने वाला एकदम पॉजिटिव हो जाएगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और ऊपर से जो आकांक्षा एक पॉइंट था, वहां पे मैं मैसेज डालने वाली थी कि वो वाला पॉइंट मुझे उसका बहुत अच्छा लगा था. मैं ये मैंने लिखा है, मैं देख के बताती हूँ कि एक पॉइंट था वहां पे, आई वाज सो अमेज्ड कि ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था. मैंने वो नोट डाउन भी किया है. So अगर हमें हमारा बिजनेस बढ़ाना है तो we'll have to do the business plan in this way, and when you practice it regularly, I'm sure that one day we all will give a powerful business plan like Aakanksha is doing, right? Yes, sir. Kenneth, you want to say something? Madam, I was not part of this meeting. Rodney was part of the meeting. I was in one meeting, other meeting, with respect to my issue I had one. Yeah. So Rodney is highly impressed, though he doesn't want to speak in front of the camera. Rodney was highly impressed. So I think I missed out a very good opportunity of understanding this. Iska video recording आप लोग upload करने वाले हैं क्या? Yes, we have the video recording. We'll share it. So just share this, and if I need any help, I'll get back. For your information, we have the recordings of all the Wednesday meetings what we are having. Water, then how to make your demos more effective. Even today's we are recording it so that those who have missed it. So this is not an option that we miss the meetings, but if you have missed it for some reason, then you can go. Now, my point is, it was very useful. Rodney was saying highly about. Of course. That's why we record it also, no? Please. It's not for the convenience, but it is for referring afterwards. So this shouldn't be an excuse कि recording है बाद में देखते. So see, if you want to grow in your business, you have to remove time. You'll have to learn. You have to practice. So दिन का अगर 1 या 2 घंटे हम dedicate करेंगे कैंगन के लिए, what we have to do? See 2-3 videos daily. Practice your business plan. Practice your demo. अगर ये हमने चीजें रेगुलरली करना स्टार्ट कर दिया, then no one can stop. You also can make a big team, but you have to be ready. कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं, भगवान कब आते हैं? जब आप रेडी हो. हेल्प कब मिलता है? जब आप रेडी. So get ready, right? So just
So if you're not getting sales or if your business is not growing, that means you're still not ready. So please, so let's buckle up fast now and do an amazing business. Any questions? And Aakanksha, you completed your plan also within half an hour. So that was also a good point, because we don't have to make it very long also. And plus, पहले हमारा कैसा था कि we used to give business demo. Demo हम लोग का 40-45 minutes चलता था, and only 15 minutes we used to just roughly show the business plan. But now it's not that. We have started कि demo थोड़ा छोटा और fast करने. Not giving more information during the demo. See, once the machine will come home, that time you can in detail explain everything once again. But for now, when you are going for a business presentation, 30-35 minutes में हमें business presentation खत्म करना है, and 25-30 minutes हमें business plan के लिए भी dedicate करना है. Because now we are all over here for business. We want to grow our business. We want more business partners. So just good demo will not be sufficient. We have to go for a good business plan also, right? And जो भी last time के homework है, I'm reminding everyone once again, feedbacks share करने हैं, make a small video, whatever experience, whatever benefits you all have got, record it very nicely so that we can put up on our YouTube channel. So that in our group, if anyone wants some feedback, we can take it from there. So it should be recorded very nicely in a loud voice, which is audible, so that we can share. हम जैसे दूसरों के testimony सुन रहे हैं, we should also share our testimony. So first of all, videos बनाइए अपने feedback के. Second, list. Last time we had discussed that we should have a list ready, so that we can always update, or so that we can always refer to it. कि किसको demo दिखा दिया, कौन बाकी है, next किसको दिखाना है, and keep adding names because we keep meeting new people every day. So maybe your list can also be upgraded every time. And practice your demos and practice your business plan. Very important. So I hope this Wednesday meetings are useful to everyone, and we keep meeting. So if you're really excited and if it's helpful, please show me this. Camera on and photograph. Yeah, sure. And put your feedbacks on the group also, so that those who have missed it. So ready, everyone? Thank you. So if you don't have any questions, no queries, so we'll end the meeting today. Wish you all a very happy Raksha Bandhan festival. Wish you the same. Thank you, Wish Nana. you Thank the you so same. much, Aakanksha. Aakanksha, wo. Thank you, Aakanksha. Thank you everyone. Thank you, Aakanksha. Thank you, everyone. Bye everyone. Thank you. Bye. Bye. Happy Raksha Bandhan. Bye. Happy Raksha Bandhan. Bye. Bye.